गुड इवनिंग टू एवरीवन वेलकम बैक टू गसियन ट्यूटोरियल। तो देखो प्रीवियस 4 क्लास रे हमें मेकानिक्स रो हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड केमती हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल बा रिजिड बॉडी रो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन ओके टॉर्क केमती कैलकुलेशन करंती ओके ए सब जिंस हमें पढ़तिले। तो आज हमें कैलकुलेशन करबा डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सेस। ओके तो देखो प्रीवियस क्लास रे हमें कैलकुलेशन करथिले थिन रॉड रो ओके। सो आज हमें कैलकुलेशन करबा रेक्टेंगुलर लामिना। तो वी बी पॉइंट प्रीवियस क्लास रे हमें ए पॉइंट डिस्कशन करथिले ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन रेक्टेंगुलर लामिना ओके। तो देखो okay. तो फर्स्ट केस हमें नबा केस 1 ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center of mass in the plane of the lamina and parallel to its length ओके। तो देखो लेट्स सपोज हमें गोटे रेक्टेंगल लबा रेक्टेंगल ओके। तो दिस इज माय रेक्टेंगल ओके। तो हमें कैलकुलेट दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास सी। तो हमें गोटे कैलकुलेशन करबा गोटे एक्सिस जोटा कि तार सेंटर ऑफ मास देखि जाउथबो और पैरेलल टू इट्स लेंथ। लेंथ हला l ओके ब्रेथ हला b ओके एंड मास हला रेक्टेंगुलर m ओके। तो आमे कौन कले आमे रेक्टेंगल को छोट छोट पार्ट रे भांगिबा ओके। देखो लेट्स सपोज एटा हमर एक्सिस ए एक्सिस रे हमें रोटेट करछंती मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेशन करे अछि i ओके। लेट्स सपोज ये ix ओके। सो मु गोटे कोन नेली लेट्स सपोज मु गोटे लाइन नेली देखो एटा गोटे छोट लेंथ रो परपेंडिकुलर लाइन नेली ओके जार विड्थ हला dx ओके dx आउ से x रो अछि सेंटर ऑफ मास रो x रे अछि ओके। तो आर मास हला केते ना dm ओके। तो टोटल मास हला केते ना येला यूनिफॉर्म सब जगह रे कोन अछि समान मास अछि। तो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लामिना टोटल मास हला a ओके। तो मास डेंसिटी हम जदि देखिबा मास डेंसिटी जेतु एरिया अछि एठी सिग्मा आसीबो ओके मास पर यूनिट एरिया। तो मास हला m एरिया हला l into b ओके l into b ओके। सिंपल हमें कैलकुलेशन कर देले ओके। सो लेट्स सपोज टोटल जो हमें गोटे छोट एलिमेंट नेले रॉड टाइप रोड नेले बिकॉज बहुत सारा रॉड को जदी ए भलिया पैरेलली जॉइन करबी ताले मु गोटे रेक्टेंगल पाइ छिबी ओके। एमति एमति रॉड को जदी मु जॉइन करबी तो ऑब्वियसली मु कोन करबी गोटे रेक्टेंगल पाइ छिबी ओके। तो गोटे थिन मु स्मॉल रॉड नेली जहार की थिकनेस हला dx आवाला मास m ओके। x डिस्टेंस रे अछि ओके x डिस्टेंस रे अछि। अच्छा मुझे यही एक्सिस रे रॉड को रोटेट करबी ताले हमें जस्ट पढिछंती प्रीवियस क्लास रे ओके। तो जदी मु रॉड को रोटेट करबी और लेट्स सपोज ए एक्सिस ता हला ए बी लेट्स सपोज एटा हला ए बी ओके। सो एटा हला ए एटा हला बी ओके। तो ए बी चारि पटे मु रोटेट करबी ताले हला डेल्टा आई ए बी इज इक्वल टू डेल्टा काई लिखली ना गोटे छोट मास पई मु कैलकुलेशन करछि देन मु टोटल रेक्टेंगल पई कैलकुलेशन छोट रॉड पई केते हबो ना dm तार मास हला dm आउ तार लेंथ हला केते ना देखो आर लेंथ जहा ब्रेथ हला सया b ओके। सो dm हम लिख परिबा b स्क्वायर ओके dm b स्क्वायर एति की रॉड रो जदी हमें मझिरु घुरेबा देखो गोटे रॉड को जदी हमें मझिरु रोटेट करिबा ताले m l स्क्वायर बाय 12 एमति हला dm m जगह केते dm
एल जगह लेंथ केते अछि रॉड रो लेंथ हला बी सो 1/12 सिंपल एटा में ऑलरेडी जानि छथि वी नो ओके वी नो okay हमें लिख परिबा we know if a thin rod is rotated about an axis perpendicular to its length and passing through its center then its moment of inertia is that much okay so then total moment of inertia tale kon habo the moment of inertia of the lamina about AB is so IAB is equal to okay integration delta IAB is equal to 1/12 dm b square okay integration total rectangle में integration तो b square upon 12 constant बाहर पळे आसला dm रो integration हला m so b square upon 12 ये हला कैपिटल टोटल मास हला केते dm हला इंटीग्रेशन कर दे टोटल मास पळे आसीबो so basically IAB okay is equal to mb square divided by 12 देखो जदी हमें लेंथ अबाउट रे लेंथ को देखो जदी हमें लेंथ एटा को कहा कोथरे हमें रोटेशन करले ओके पैरेलल टू इट्स लेंथ okay passing through its center and axis placed in a plane of that rectangular lamina okay से प्लेन ले जदी गोटे एक्सिस थिबो पैरेलल लेंथ थिबो तार उल्टाटा हमें नबा तार उल्टाटा कोन ना ब्रेथ रो कोन लेंथ नबा हमें ओके लेंथ रो कोन लेंथ नबानी हमें ब्रेथ नबा ओके mb स्क्वायर अपॉन 12 एटा मन रखथिबो अल्टरनेट वे सिमिलरली केस 2 रे हमें डिस्कशन करिबा केस 2 रे हमें डिस्कशन करिबा moment of inertia about an axis passing through its center of mass in the plane of the lamina and parallel to its breadth okay and parallel to its breadth okay तो देखो ब्रेड को पैरेलल होबो सो रेक्टेंगुलर रोटे लामिना नबा सो एई भले हम रोटेट करथिले एबे एई भले हम रोटेट करबा ओके एई टाइप रो रोटेट तो एई टाइप रो रोटेट करबा दैट इज IAB ओके ओके तो एमि देला माने हमें ताको परपेंडिकुलर करके गोटे छोट एटा हला सेंटर ऑफ मास ओके ताको परपेंडिकुलर करके हमें गोटे स्मॉल सेगमेंट नबा रॉड टाइप रो परपेंडिकुलर करी नबा ओके परपेंडिकुलर तो आर मास केते होबो आर मास लेट्स सपोज dm ओके लेंथ हला dx dy जेतु y एक्सिस एटा अछि तो dy आ एटा सेंटर रो y डिस्टेंस रे अछि ओके देन हमें कोन करबा हमें जानचुंदी वी नो दैट moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to its length and passing through its center okay is केते ना delta by DIAB is equal to okay so let's suppose our mass dm okay एटा mass dm आ आर लेंथ हला देखो आर लेंथ जदी l हुए सो ऑब्वियसली रॉड रो लेंथ कोन हबो a हबो ओके तो dm l square upon 12 simple okay so total moment of inertia of lamina about AB is IAB is equal to integration DIAB is equal to integration dm l square upon 12 okay so l square upon 12 बाहर पळे आसला dm रो इंटीग्रेशन हला m so m l square upon 12 so IA देखो
parallel to its breadth हेले तार लेंथ आसीबो ओके आ parallel to its length हेले mb square तार breadth रा distance ओके so iab ml square upon 12 okay that is the moment of inertia of a rectangular lamina about an axis on parallel to its length okay parallel to its breadth okay so obviously eta hochi breadth को parallel होची एटा जति breadth तो breadth को parallel होची and passing through its center of mass okay okay then देखिबा okay so next case 3 okay so basically let's suppose it हमर rectangular lamina okay so एटा हला x axis एटा हला y axis एटा हला z axis okay तर mass हला m length हला l okay breadth हला b okay so we know ix माने देखो लेंथ हम माने कोन आसीबो b आसीबो m b स्क्वायर x को काहा को पैरेलल देखो x टा होची लेंथ को पैरेलल ता आसीबो कोन b आसीबो m b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 and iy is equal to ml square divided by okay so according to perpendicular axis theorem okay so according to perpendicular axis theorem iz is equal to ix plus iy तो देखो iz टा कोन अछि रेक्टेंगुलर को परपेंडिकुलर अछि आ दीटा एक्सिस हमें चूज करले जोटा कि परस्पर सहित परपेंडिकुलर थिबो आ सही फर्स्ट एक्सिस रो सेंटर ऑफ मास के पास करतो ओके तो iz is equal to ix plus iy okay so iz हमें कैलकुलेशन करबा iz is equal to ml square divided by 12 plus mb square divided by 12 so common नहीं जिबा m divided by 12 तो l square plus b square okay iz हमें पाई okay so क्वेश्चन जदी आसिला स्क्वायर पई ओके स्क्वायर पई जदी आसिला तले l is equal to कोन जिवो b हमें नहीं जिबा a ओके जदी स्क्वायर पई नहीं जिबा तले एटा जिवो a एटा भी जिवो a ओके ताहले iz केते आसीबो ना m divided by 12 a square l जगह भी a square b जगह भी a square ओके तो m a square divided by 6 ओके तो iz रेक्टेंगुलर पई पड़े ओके ओके तो रेक्टेंगुलर पई भी पड़े आसी ओके यदि कॉर्नर दे कहला ओके यदि कॉर्नर दे की कहला ताले भी m a square by अपन आसीबो 6 पड़े आसी ओके तो এটা ভালো iz তে एक्सिस देखि तो যদি डायगोनल along the diagonal देला ओके सो डायगोनल पई भी तो i डायगोनल पई के देसिबो ओके सो डायगोनल पई भी के देसिबो m a square divided by 6 बेस ओके ओके सो डायगोनल पई देखो आमे जदी आ गोटे नबा प्रिंसिपल एक्सिस ओके प्रिंसिपल एक्सिस जदी नबा तीनटा सो गोटे आसीबो z लेट्स सपोज एटा को हम x नबा एटा को हम y नबा ओके तो i z आसीबो m a स्क्वायर बाय 6 और डायगोनल रंग रे पळे आसीबो m स्क्वायर बाय 12 पळे आसीबो 6 ना 12 पळे ओके ए दिटा को हम ऐड करले पाइबा m स्क्वायर बाय 6 ओके ओके तो एबे हम देखिबा रिंग बा हुक पई देन डिस्क पई देखिबा ओके सो राइट डाउन सी आ गोटे ऑब्जेक्ट रो देखिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ओके ओके तो फर्स्ट केस नबा केस नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to the plane of plane of the disc sorry मु डिस्क नेली फर्स्ट हमें रिंग नबा हला तापर डिस्क करियो ओके सर्कुलर हुफ और रिंग ओके भीतर हलो ओके सो रिंग माने हलो ओके तो प्लेन ऑफ डिस्क लिखबानी हमें लिखबा फर्स्ट रिंग पई कैलकुलेशन करियो ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस
passing through perpendicular to the plane of ring, okay, and passing through the center, and passing through the center. Okay, let's suppose I'm going to ring color, okay, that is z axis. Okay, let's suppose I'm going to छोटो एलिमेंट नेले मास हला dm तार रेडियस हला r, okay, हला z axis. Okay, तो जदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis लिखिबा, okay, तो dij is equal to dm और डिस्टेंस हला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हला r स्क्वायर. Okay, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about z axis is देबो ना iz is equal to इंटीग्रेशन करिबा dij, okay, so dm r square, okay, और टोटल मास हला कैपिटल m, तो r square कांस्टेंट सब एलिमेंट पई ए डिस्टेंस हला समान, एठी भी एलिमेंट नेले डिस्टेंस हो r, तो r square बाहर पळे आसिला dm रो इंटीग्रेशन हला m, तो m r square, okay, तो iz is equal to mr, okay, तो मन रखिबा रिंग काई केते हबो ना जदि सेंटर रे पास करिवो, ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ताले कोन हबो mr स्क्वायर, ओके, रिंग पाई मन रखिबो. देन केस 2 सब केस हमें देखिबा. केस 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया about diameter, okay, तो गोटे रिंग एमे नबा, ओके, तो एटा गोटे डायमीटर, एटा गोटे डायमीटर, ओके, जोटा कि प्लेन ऑफ द रिंग अछि, एटाला x एक्सिस, एटाला y एक्सिस, और एटाला z एक्सिस. z एक्सिस रे हमें देखतिले केते आस्तिला, वी नो I z is equal to mr square, okay, so from perpendicular axis theorem, iz is equal to ix plus iy, okay, from symmetry এটা আমি জানছনি অলরেডি, so from symmetry ix is equal to iy, okay, तो एक्चुअली बॉडी को हमें जदी x एक्सिस रे रोटेट करिबा, जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसीबो y एक्सिस रे रोटेट करले सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसीबो, बिकॉज़ देटा को सिमेट्रिक, ओके, घुरेले सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन अछि x रो चारि पटे, y चारि पटे भी एपटे जेमते सेपटे सेमते सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन अछि, तो जति पाए ix is equal to iy, ओके, ताले iz is equal to केते हेजिबो ना 2ix, ओके, सो iz जगह रे वैल्यू पुट कर दबा mr स्क्वायर is equal to 2ix, okay, so ix is equal to केते हेजिबो, ix is equal to mr square divided by 2, so about diameter, okay, diameter और जो डायमीटर टा की कोड थिबो ना प्लेन रे थिबो, ओके, से रिंग रो प्लेन ले थिबो, ओके. नेक्स्ट केस हम डिस्कशन करबा केस 3, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a tangent और से tangent टा कोड थिबो ना इन द plane of the ring, ओके, डायग्राम केमति बनेबा तले, लेट्स सपोज हला एटा हला हमरो x एक्सिस, एटा हला हमरो y एक्सिस, ओके, ओके, सो डायमीटर एमिति भी परिबो और टेंजेंट, ओके, पैरेलल टू इट्स डायमीटर और कोन अबाउट इट्स डायमीटर, ओके, बिंचणा जेम देखतिबो, बिंचणा रिंग टाइप रो, ओके, सो ताको हमें गोटे डायमीटर रे रोटेट करले, ओके, तो ताहले हमें जदी i y रे बाहर कर दबा, ताहले हमें i y डैश रे भी बाहर कर दबा, ओके, तो i y रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हमें जानचंदी, तो i y is equal to mr square divided by 2, so from parallel axis theorem, okay, so i dash is equal to I plus m r square, ये जो r टा हला i और i dash भितरे
perpendicular distance देखो एटा perpendicular distance ला radius of the ring which is equal to r so mass of the ring हला m तो हम लिख परिबा I जगह रे केते लिखिबा कहा पर व्यवहार करछंती IY प्लस mr स्क्वायर IY ऑलरेडी हम जानि छंती ना mr स्क्वायर बाय 2 ओके प्लस mr स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 2 mr स्क्वायर ओके so I dash is equal to 3 by 2 mr स्क्वायर ओके तो केस 3 देखिबा हमें सॉरी केस 4 देखिबा केस 4 सेही टेंजेंट केस रे बाहर करिबा बट टेंजेंट आउ पैरेलल हबनी परपेंडिकुलर टू द प्लेन हबो ओके सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a tangent okay perpendicular to its plane tangent habo but सेठी थला parallel एठी थबो perpendicular okay so diagram केमति ड्रा करिबा let's suppose this is our ring okay this is x axis okay this is y axis एटा हला हमर z axis एटा हला z axis okay आ गुड axis नबा में z dash okay z dash which is perpendicular को कोडी plane of the को perpendicular okay plane को perpendicular okay so radius la distance anka bhitar distance la r it is semti iz ame janchanti we know iz by moment of inertia about z axis is equal to mr square simple okay from parallel axis theorem okay parallel axis theorem kon janiba na I dash is equal to iz plus mr square okay so iz hela mr square okay plus anka bhitar distance hela same r so mr square so answer is about 2 mr okay short question as pare 2 mark ke भी as pare okay so ए सब जिंस आसीबो निहाती आसीबो okay okay so ring रो हमें सबु जते भी हमको जानिया पे अछि सो हम ऑलरेडी जान देले ओके कहा अबाउट रे रोटेट करले कोन आसीबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके तो एबे हम देखिबा डिस्क केस ओके सो डी disk so moment of inertia of a disk okay so that okay तो डिस्क माने देखो डिस्क माने कौन बहुत सारा रिंग को ऐड करले हम डिस्क पाई परिबा ऑफ डिफरेंट रेडी ओके so let's suppose एटा उडा हमर हला कोन डिस्क ओके तो एटा हला सेंटर ओके सी एटा हला रेडियस एटा हला x एक्सिस एटा हला y एक्सिस एला z एक्सिस ओके ओके तो डिस्क माने कोन कवर हे कि थिबो ओके मास रे कवर हे कि थिबो ओके रेडियस हला r एंड डिस्क रा मास हला m ओके तो हमें कोन करबा ओके हमें गोटे कोन करबा हम गोटे एनुलर रीजन नबा बा गोटे रिंग नबा ओके गोटे रिंग देखो मनेली ओके गोटे रिंग नेली जार मास हला dm ओके आउ रेडियस हला एटू रेडियस हला r स्मॉल r बिकॉज़ r वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R ओके आउ तार थिकनेस हला dr ओके तो मास ऑब्वियसली dm ओके so let's suppose देखो let's suppose केस 1 हम फर्स्ट केस नबा तापर देन डिसाइड करबा कोठी बाहर करबा ओके केस 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center ओके तो ऑब्वियसली z एक्सिस अबाउट हमको कैलकुलेशन करे पे देछि सो हम कोन करले गोटे रिंग नेले तो से एरिया गोटे रिंग नेले तार एरिया केते हबो एरिया ऑफ द रिंग
area of the ring is equal to देखो आर area of the ring हला केते आर हला लेंथ हला केते 2 pi r आ हला width हला केते dr 2 pi r dr हे हला तार लेंथ ओके तो mass of the hoop बा mass of the ring mass of the ring केते हबो ना जोटा के हम dm बोली नै चंती 2 pi r into dr into mass density so 2d रे mass density को हम सिग्मा बोली नियंती ओके जोटा की सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया पाई r स्क्वायर ओके सिग्मा रो वैल्यू हला एतिकी ओके और हम पुट करबा टोटल मास अपॉन टोटल एरिया ओके मास पर यूनिट एरिया में पाई गले आ एतिकी एरिया रे मल्टीप्लाई करले हमें ऑब्वियसली dm रो वैल्यू हमें पाई गले बुझियला ओके तो एबे हमें कैलकुलेशन करबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the ring about z axis z axis रे देखो सब डिस्टेंस देखो z axis रे जदि हम कैलकुलेशन करबा डिस्टेंस सब एलिमेंट रो जो जति भी dm अछि समस्त डिस्टेंस ला r तो गोटे रिंग रो जदि हम ता सेंटर रे कैलकुलेशन करबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रीवियस रे जस्ट हम देखिले कि dij इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट dm r स्क्वायर ओके केते हबो ना dm r स्क्वायर ओके r स्क्वायर dm इज इक्वल टू r स्क्वायर dm रो वैल्यू हम पुट कर दबा 2 pi r dr into sigma sigma रो वैल्यू केते ना कैपिटल m upon pi r स्क्वायर ओके तो pi pi कैंसिल आउट हो गला तो dij इज इक्वल टू 2 ओके 2m r cube dr ओके अपॉन r स्क्वायर ओके आमे कोन करबा एठी टोटल iz कैलकुलेशन करबा तो इंटीग्रेशन करबा diz को फ्रॉम केते ना 0 टू r ओके सो 2m अपॉन r स्क्वायर ओके इनटू r क्यूब dr रो इंटीग्रेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल बिकॉज़ रिंग तक डिफरेंट रेडियस यदि बढ़ेबा तले हम डिस्क रे पहुंच पारी ऐड करी ओके तो सेति में हम कोन करले ना 2m अपॉन r स्क्वायर को बाहर पने आसले कांस्टेंट बोली सो 0 टू कैपिटल r r क्यूब dr ओके तो 2m अपॉन r स्क्वायर ओके सो r क्यूब रो इंटीग्रेशन हला r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 लिमिट पुट करबा 0 टू कैपिटल r ओके तो 2m अपॉन r स्क्वायर इनटू r टू द पावर 4 अपॉन 4 दैट इंप्लाइज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ओके 2 रे 4 कटि गेले 2 तो बेसिकली iz हमें डिस्क पई पाइले mr स्क्वायर बाय 2 मन रखथिबो को एक्सिस ना परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओके सिमिलरली सेकंड केस देखिबा हमें ओके देखो सेकंड केस देखो केस 2 ओके केस 2 देखिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a diameter okay so let's suppose एटा होची हमर केते एटा वाला डिस्क ओके डायमीटर माने ए टाइप रो जेमते रिंग केस रे बाहर करले इट्स सेमती बाहर करबा ओके x axis that is y axis perpendicular हला z axis so we know moment of inertia of a disk of mass m and radius r about an axis perpendicular to its plane okay and passing to its center is already हमें जानचंती iz is equal to mr square divided by 2 okay so from perpendicular axis theorem okay so iz is equal जेतु एटा 2d ऑब्जेक्ट so iz is equal to ix plus iy एटा हम ऑलरेडी जानचंती okay so by symmetry of the disk
disk, okay, disk, okay, ix is equal to iy, okay. So ix यदि iy हला ताले iz is equal to 2ix, okay. ताले iz हमें जानते हैं किते mr square divided by 2 is equal to 2ix. तो ix हमें पाई गले mr square divided by 4 which is equal to also iy, okay. So ये हला about a diameter, okay. So second case में देखिबा about a tangent, okay. So case 3 देखिबा, case 3 about a tangent. और tangent टा कोठी थिबो ना in its own plane, own plane, okay. tangent टा कोठी थिबो ना own plane ले थिबो, देखो एटा गोटे डिस्क हला, एटा गोटे डिस्क हला, ओके, डिस्क हला. So that is diameter हला, एटा हला y axis diameter, ओके. एठी हमें आउ गोटे y axis को प्लेन पैरेलल करिकी हम गोटे tangent ड्रा करले डिस्क रो, ओके. tangent ड्रा करले डिस्क रो जो ए अबाउट रे हमको दरकार बा आई वाई डैश अबाउट रे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दरकार. सो एटा ऑब्वियसली हमको भीतर डिस्टेंस केते परपेंडिकुलर डिस्टेंस हला r. सो आई वाई जस्ट हम एबे कैलकुलेशन करले mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ओके. फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके, हमें जानछंती i dash is equal to I plus mr square. I dash here हला I y dash is equal to I here हला I y plus अंक भीतर डिस्टेंस हला r, सो सेति पई mr square, ओके. तो I y ऑलरेडी हम जानछंती mr square divided by 4 plus mr square, so 5 divided by 4 mr square, okay. I y dash is equal to 5 divided by 4 mr square, okay. ये हला along moment of inertia about about a tangent in its own plane, okay. next देखिबा हमें से tangent about रे but perpendicular to its plane. तो केस iv मु देखो डिटेल्स रे सब केस पढौची, एग्जाम रे क्रॉस क्वेश्चन पचारले भी तमे करि परिबो यूजिंग perpendicular and parallel axis theory, okay. So this is our disk of mass m, and radius r, okay. So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis, okay. So without a tangent z dash, okay, which is perpendicular to the plane of the disk, okay. এটা হলো perpendicular, okay. तो देखो, तो iz আমি জানছন্তি iz is equal to केते ना mr square divided by 2, okay. सेमती from parallel axis theorem, parallel axis theorem, from parallel axis theorem iz is equal to I dash is equal to I plus mr square, okay. I dash एठी केते ना iz dash, तो iz plus mr square, iz ऑलरेडी हम ऊपर लिखछंती mr square by 2, तो mr square by 2 plus mr square is equal to 3 by 2 mr square iz dash, okay. तो बेसिकली ताकू तुम मन रखिबो, ओके. जहाँ जहाँ पढ़ेली ताकू डेरिवेशन सहित भी ताकू मन रखिबा निहाती दरकार, बिकॉज़ शॉर्ट क्वेश्चन पई तुमको इजी हबो कि संगे संगे केमते आंसर करिवो, ओके. ओके, तो टाइम अछि हम पाखरे, तो हमें कोन करबा ना आ गोटे ऑब्जेक्ट रो देखिबा मोमेंट ऑफ, ओके. सो देखो ई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ऑफ a peak hollow cylinder about symmetric axis, okay.
देखो थिक कहीं कहला बिकॉज थिक है इन जनरल थिक टाको हम कौन कर परिबा थिन बनै परिबा आ सॉलिड सिलिंडर पे बनै परिबा ओके सो देख लेट सपोज हम गोटे सिलिंडर नबा हम गोटे सिलिंडर नेले ओके दैट इज आवर axis ओके ओके तो बेसिकली से कहूँ कि हम गोटे नबा कि सिलिंडर ना गोटे हॉलो सिलिंडर नबा ओके ठीक ओके सो एटा ला रेडियस ला r1 और रेडियस ला r2 ओके तो बेसिकली सिलिंडर टा r1 लु r2 जाइछि ओके तो हमें आपको जॉइन करि परिबा तो देख सॉलिड पार्ट कोटा अछि हॉलो पार्ट कोटा अछि मु कहि दोछि ओके ओके so that is solid part okay so that is solid part okay so hollow part that is solid part okay okay so basically एटा होची गोटे सिलिंडर भितर हैला हॉलो आर थिक हैला कोन r1 लु r2 पर्यंत रेडियस जाय छै okay अच्छा तो एबे हम कोन करबा देखो एबे हम कोन करबा ओके तो आमे गोटे कोन नेले आमे गोटे एनुलर रीजन नेले ओके आमे सेमती गोटे थिन सिलिंडर आ भितर नेले ओके थिन सिलिंडर तो आ भितर आमे गोटे थिन सिलिंडर नेले ओके देख जार रेडियस है सेंटर रु आर आउ तार थिकनेस ओके तार मोटे लगे डी आर ओके आर आउ डी आर ओके देन आपको जदि हमें सेगमेंट को r1 रु r2 पर्यंत इंटीग्रेशन करबा देन हमें कोन गोटे थिक कोन सिलिंडर पाइ जेबा ओके तो ए जो रिंग नेले तार मास हला केते आर मास हला केते dm ओके सिलिंडर रो हाइट हला h नहीं परिबो तमे ओके आउ रो हैला कोन रो हैला मास डेंसिटी ओके तो देखो रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी okay mass density means mass per volume of the hollow कोन थिक सिलिंडर हैला मास देखो वॉल्यूम हम केमति कैलकुलेशन करबा देखो वॉल्यूम हम केमति कैलकुलेशन करबा फर्स्ट एरिया कैलकुलेशन करबा अनुलर रीजन लो एरिया so total area pi r2 रो स्क्वायर माइनस pi r1 रो स्क्वायर ओके होल टोटल हम कोन करबा ना h मल्टीप्लाई करबा एरिया इनटू लेंथ मल्टीप्लाई कर देले हम पाइ जिबा कोन पाइ जिबा हम एरिया पाइ जिबा सॉरी हां वॉल्यूम पाइ जिबा ओके सो मास पर एटी हम पाइ कॉमन नै गले r2 रो स्क्वायर माइनस r1 रो स्क्वायर इनटू h ओके मास पर वॉल्यूम ओके ताले मास इज इक्वल टू केते हे जिवो ताले m इज इक्वल टू रो इनटू पाइ r2 रो स्क्वायर माइनस r1 रो स्क्वायर इनटू h तो बेसिकली हमें मास एटी पाइ गले इक्वेशन 1 ओके मास पाइ गले इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आउ रेडियस ओके तो बेसिकली हम गोटे थिन कोन स्मॉल एनुलर रीजन नबा सो हियर सॉल्व करिया पई हमें नबा में पड़िबो हियर वी इमेजिन
imagine that the cylinder is divided into a number of thin cylinder, number of thin cylinder, cell कहले भूले जीव, thin cylinder of radius r and thickness dr. Okay, so volume already हमें लिखी सारी. Okay, so volume of the small बा thin cylinder, small cylinder बा हमें लिख परिबा thin cylinder. Okay, thin cylinder. Okay, देखो सिलिंडर रो सरफेस एरिया केते, जो स्मॉल सिलिंडर हमें नेले रेड कलर मु जो करछि तार सरफेस एरिया केते वॉल्यूम नेबा dv इज इक्वल टू सरफेस एरिया केते ना पाई एरिया हला केते 2 पाई r, थिकनेस हला dr. ओके, थिकनेस हला dr, 2 पाई r dr और हाइट हला h. तो वॉल्यूम हमें पाई गले एरिया इनटू हाइट हला वॉल्यूम. ओके, देन मास ऑफ द थिन सिलिंड्रिकल सेल, मास ऑफ द in cylindrical cell okay, so dm is equal to rho into dv 2 pi r dr into h. so dm पाई गले. ओके, अच्छा, so एबे हमें कैलकुलेशन करबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, so the moment of inertia of the cell by cylindrical cell about co-axis na symmetric axis, about symmetry axis di is equal to देखो जेतले रिंग को हमें देखो एटा गोटे रिंग, बहुत सारा रिंग को नेकी हमें कोन करबा थिन सिलिंड्रिकल सेल बनै परिबा बहुत सारा रिंग को नेकी. ओके, तो रिंग को जदि हमें थाका थाका करिक रखिबा ताले सिलिंड्रिकल सेल पाइ जिबा. ओके, जो स्मॉल सिलिंड्रिकल सेल हमें नेचर. ओके, तो गोटे रिंग रो जदि कोन मास dm हुए तार रेडियस r हुए ताले अबाउट ए एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑलरेडी हमें जानचंदी कोन हुए ना dm और तार रेडियस हला r स्क्वायर. ओके, कोन हुए ना dm r स्क्वायर. ओके, एठी भी सेमती dm r स्क्वायर जेतु टोटल हमें नेचंदी, तो कोन भाई टोटल टाको मास नेचंदी केते dm, सेति में dm r स्क्वायर हे. ओके, एबे हमें कैलकुलेशन करबा टोटल सिलिंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो moment of inertia of the cylinder about z axis, okay, z axis रे I is equal to dij. okay, integration is equal to dm r square integration. okay, तो dm रा वैल्यू पुट कर दबा. dm रा वैल्यू देखो कोन थिला rho into 2 pi r into dr. okay, into h into r square. okay, तो देखो कांस्टेंट कोन बाहर पळे आसीबो 2 pi rho h बाहर पळे आसीला. ओके, इंटीग्रेशन कोड करबा ना r1 लु जेतु r2 पर्यंत ठीक अछि, तो r1 लु r2 पर्यंत हम इंटीग्रेशन करबा रेडियली. ओके, बाकी चारि पटरे कोन सिमेट्रिक अछि, सेति पे हमें r1 लु r2 पर्यंत इंटीग्रेशन करबा. तो 2 pi rho h बाहर पळे आसीला. सो एठी अछि r स्क्वायर, एठी अछि r, सो हेला r क्यूब. ओके, r क्यूब dr r1 लो r2. ओके, तो देखो हेला 2 pi rho h. ओके, तो r टू द पावर 4 इंटीग्रेशन हेला r क्यूब r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 लिमिट हेला r1 लो r2. ओके, तो 2 pi rho h r2 टू द पावर 4 minus 1 by 4 बाहर पळे आसला r1 to the power 4. ओके, देखो ये 2 कटेला, सो pi rho h divided by 4. ओके, तो ये ला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यदि फार्मूला पकेबा r2 रो स्क्वायर माइनस r1 रो स्क्वायर होल इनटू r2 रो स्क्वायर प्लस r1 रो स्क्वायर. ओके, तो देखो
एठी हमें सेति में फास्ट कैलकुलेशन करथिले मास ऑफ द सिलिंडर जोटा कि हमरा आस्तिला देखो इन टर्म्स ऑफ रो पाई h r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. So from equation 1, okay, so from equation 1, okay, I z is equal to pi rho h आ बदले हमें कौन पकेबा ना m divided by 4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला. ओके मु जनरल फार्मूला बाहर कर देली. ओके सो डिस्क पई भी से आबो. ओके जदी हम ओटे डिस्क पई बाहर करबा डिस्क पई भी से. ओके देखो अनुलर डिस्क पई देखो जदी ओटे डिस्क अछि ए भलिया. ओके एटा होची तारो iz एक्सिस. ओके तो एटा जदी हला r1 एटा जदी हला r2. ओके तो m by 4 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर. ओके तो एबे आरो डिफरेंट केस बाहर करबा. देखो एटा ला इंपोर्टेंट फार्मूला आपको मन रखिबो. ओके सो एठी हमें थिन आउ थिक रा बाहर कर परिबा. सो केस 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cylinder about symmetric axis रे जदी बाहर करबा. देखो जदी सॉलिड ही गला तले r1 टा कोन एठी मास पूरा थिला तो मास बॉडी पूरा सेंटर पर्यंत पळे आसीबो. टोटल टा कोन हे जिवो सॉलिड हे जिवो तो r1 टा 0 हे जिवो. सो हियर r1 is equal to 0 and r2 is equal to capital R. तो पुट कर देले iz पळे आसीबो m divided by 4 r square. So mr square by 4 जोटा कि डिस्क पई बाहर जोटा कि बाहर है. तो सॉलिड पई सॉरी मैं भूल कर देछि. 2 रे 4 कटि गले एठी 2 आसीबो. सॉरी 2 रे 4 कटि गले 2 आसीबो. सो एठी मु 2 लिख देछि. सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. तो m by 2. ओके सो m by 2 आसीबो. m by 2. ओके so m by 2 r2 स्क्वायर प्लस r1. ओके सो सिमिलरली ढेर वाला आसीबो mr स्क्वायर by 2 जोटा कि ऑलरेडी हमें डिस्क पे आसे mr स्क्वायर by 2. ओके सॉलिड डिस्क पे आसे. ओके सो सिमिलरली यदि हमें केस 2 देखिबा आ गोटे केस देखिबा केस 2. ओके अ थिन सिलिंडर बा होलो सिलिंडर पे. ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इन सिलिंडर about symmetry axis. Symmetry axis ताले कोन हबो ना देखो थिन थिला माने रिंग टाइप रो हेगल. ओके तो ये जो थिला ये बॉडी r1 is equal to r2 हेगला. सो हियर रिंग हेगला r2 हलोटा बॉडी r1 r2 सहित कोइंसाइड कला r1. So r1 is equal to r2 is equal to r. पुट कर देले iz is equal to m by 2. r1 जगह केते पुट करबा r आउ r2 जगह पे r पुट करबा. तो m r स्क्वायर रिंग रे जेमति बाहर है सेमति बाहर छ. ओके तो दीटा केस हमें देखि. ओके सो एबे हमें टेंजेंट आउ ये पई पे ऑलरेडी हमें कैलकुलेशन करि परिबा. ओके जदि तुमको पचारिबो कि सॉलिड सिलिंडर अबाउट टेंजेंट. Okay, about its tangent parallel to its plane एटा हमें ऑलरेडी कैलकुलेशन करि परिबा यूजिंग पैरेलल एक्सिस. एटा ऑलरेडी हमें जानि चंदी आउ कोन ऐड करिबा ना mr स्क्वायर. एटा ला r mr स्क्वायर ऐड कर देला इजीली जेमति डिस्क रिंग रो कैलकुलेशन करछन सेमति हमें कैलकुलेशन. ओके तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिंस हला जदी सिलिंडर रो नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करिबा. ओके लेट्स सपोज गोटे सॉलिड हो कि होलो हो कि एनुलर सिलिंडर हो. ओके बा थिक सिलिंडर हो जदी एटा हला तार सिमेट्रिक एक्सिस. ओके जदी से ए एक्सिस अबाउट रे देथिबो कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to its plane. Okay and passing through its center of the cylinder. Okay तो ए एक्सिस ऊपर जदी देथिबो कैलकुलेशन करिया पई ताला हम केमते कैलकुलेशन करबा जोटा कि हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा. ओके तो थैंक यू आज पे एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे फिर